या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। Premièrement, nous remercions qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous encore une fois l'occasion कि अल्हम्दुलिल्लाह आस्तिया दमस्ती शरीफ नुपे आबगान दीन नुफे दुआ दबारगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला दन्नु हिदायत कि नुपुफे अमल शकीनुन आबगान आमा ए शकी नुपु आबगान ओजोजी। अल्हम्दुलिल्लाह कोसेना सकरात सेमेन पासे मुनिस्पिलिके अल्हम्दुलिल्लाह नुकोने की सासे लेता लिबिए पोता पुनु पोस्की dansa leala का अंजुमन लिया कलमा शहादत आबरे की दुनिया दाबरे नु रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो पागोल लिपुगाद जन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह दनुलकास का अंजुमन इनाल दा सकरात दुफिया मैक्सिमम ज़ेफ़ो कसाजिमुल्ला लिपुकी दुनिया लो ईमान लो इस्लाम ए कोसेना सकरात सेमन पासे 5 questions मंजूमन demandé une question qui dans सकरात dans हालत सकरात इसकी nous capable donner आबे जमजम दिलो जमजम। Alors ça c'est मसला là so réponse qu'il est capable de donner. Mais nous besoin guetter qui ça dimul la so situation qui était. Il est capable de boire ça de l'eau là oui non. S'il n'est pas capable de boire, mettre un petit de l'eau pour que ça de l'eau là une barkati de l'eau. Parce que dans cette situation là quand il y a al dans sakrat so la rose, la bouche, vin sec. Quand nous mettons de l'eau zamzam dans la bouche, nous imaginons akida qui ça de l'eau là, li barkati de l'eau. Inch'Allah, à cause ça de l'eau là, ça dit moula, li gagne facilité. Capable, mettez. Se répondre. Deuxième question, combien de temps un démon il reste dans sakarat? Alors, se répondre qui peut fixer les temps. Parfois, un démon reste dans sakarat un temps, parfois 2 temps, parfois 3 temps, parfois un démon reste dans un jour, parfois un démon reste dans sakarat un petit moment après quitte dunia, comment dans l'endroit fait 2 mois, 2,5 mois avant, Mohamed Iqbal Tapsi. Quand il tombe, il reste dans sakarat 5-10 minutes. Après, il quitte dunia. Peine aucun fixer les temps. Parfois, un jour, il reste dans 1 temps, 2 temps, 3 temps, la moitié de la journée, la journée. Parfois, un jour, il reste dans sakarat 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Peine aucun fixer les temps. Ça, c'est Masla Lasso répond. Après, troisième question, comment nous connaissons qu'un démon l'in al dans sakrat?
Ça c'est un vaille in demandé cette question-là, comment nous connaît? Parfois, je me rappelle qu'une fois, mon al, quand Baï Nazir Madni, son papa, l'India moi qui était, docteur India moi, qui papa inalda sakrat. Je me rappelle, mon al, pourquoi, il gay 4-5 bananes, fini gay. Mon al, là, là-bas, mon gâté. Mon gâté, parce qu'il y a un, deux, trois signes. Pena kan en fixé qui ça c'est si ça qui di muninal da sakrat. Même comme on gete mon dia no li pas da sakrat. Après mon retourner mo quoi un banane ou bien un ennemi banane le reste de la dunia. Parfois, nous guettons un dimanche bien malade. Et là, un des signes, qui est premier signe qui son néné उसकी नाक टेढ़ी हो जाती थावे सो néné थावे après so lipier li pas capable ça veut dire li pas capable manger premier dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala finit dans Surah Al-Qiyamah. Dans Surah Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala finit explique Kalla idha balagatit taraqiya wa qila man raq Kalla idha balagatit taraqiya wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Ko sena salayat na kanu gete so signification banul maikram finit explique que premier ban farishta zot chia so रूह ça veut dire लिपिए पहले लिपिए से रूह सोची होती है लाजाम में आती है après ventre après chest après so la tête après so la bouche après ban farishta zot chia so रूह depuis so la bouche विजिया एंडे सी की सो नेने उसकी टेढ़ी हो जाती हैं premier उसके लिपिए फैल जाते हैं उसमें कोई भी लाफोस नहीं रहता है après थोड़ी देर के बाद après un petit moment so lame di pas capable en pena aucun lafosse dans so lame doucement ça c'est ainsi mais pena aucun exact कोई ऐसा qui disait nous connaît qui Sajimun là Sajimun inal dans sakrat mais un des si après dernière fois chaud quand il जब वो सांस लेता है तो सांस so son licencié comme ça même ça c'est dernier l'état quand il finit quand il dit al da sakrat तो Banul Maikram fin explique des trois signes quand nous guette ça qui ça dit là c'est qu'il est bien malade il fait comme ça qui se lipie pena aucun la fosse lame pena aucun la fosse son aîné उसकी नाक टेढ़ी हो गई और फिर उसकी आवाज़ सांझे हो गई तो इससे पता लगाते हैं कि वो आदमी सकरात में चला गया एंड l'autre question un भाई ने demandé कि un madame l'inintégrale ce qui fait après combien de jours les capables sortis depuis la case une question un madame l'inintégrale après l'intégrale ce qui fait combien de jours après les capables sortis depuis la case c'est la même question non mais ça c'est masla là vous connaissez quand un Michel l'intégrale après madame reste dans la case nous connaissons ça c'est iddat quand un Michel intégrale ou bien donne talak à une madame à cause sa situation madame là il reste dans la case mais dans sa situation là il n'y a aucun pabandi n'importe qui joue les capables sortir depuis sur la case dans sa situation là qui maman l'intégrale pas l'intégrale sur Michel comme Michel intégrale après ça Michel là sur madame il reste dans la case nous disons iddat
mais anjumun so mama intekal so chifi so gaso te na kaini iddat likapau so chi nepot kizu. Okay, and dernier masla कि ऐन मादाम इन इंतकाल li musulman mais social et pas musulman il y a un غير قوم est-ce qu'il est capable de les ghusl social est capable de les ghusl c'est même masla donne coup de main tout le temps moi pour expliquer alors il est capable de donner coup de main ou bien il est capable reste dans sa place là débouter guetter ou bien donne ghusl dans toutes les trois situations il n'est pas capable de donner ghusl il n'est pas capable de donner coup de main il n'est pas capable de débouter dans sa place là qui fait parce qu'il y a deux CA mais un CA il rentre dans l'islam les musulmans après deuxième CA puli ajnabi comment un miché un madame son masla qui sa miché là li ajnabi pour sa madame là pareil comment tous les deux madame mais sa madame là c'est qu'il n'est pas rentre dans l'islam li ajnabi pour sa madame là c'est lui qui fait rentre dans l'islam mais un ajnabi n'est pas capable de bout quand donne ghusl un mayyat quand nous donne ghusl dans sa place là il n'est pas capable de bouter il n'est pas capable de donner coup de main il n'est pas besoin de donner coup de main il n'est pas besoin de donner ghusl ça c'est masla vous comprenez ou comprenez mais tous les 5 masla on finit expliquer alors dans le Coran Majid Furqan Hamid semaine passée on expliqué Allah subhanahu wa ta'ala findia surah numéro 41 surah numéro 41 para numéro 24 ayat numéro 30 c'est bien renommé ayat innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah subhanahu wa ta'ala finjia sans doute ban ki finjia nurab c'est Allah subhanahu wa ta'ala les Allah zot fin res fem losa ça veut dire les Allah zot fin res losa parole là losa iman aqida là qui morab Allah subhanahu wa ta'ala après Allah subhanahu wa ta'ala finjia innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika dans les sakrat alors dans les sakrat ban farishta zot descend l'oman là subhanallah mais quand ban là ça veut dire dans sakrat dans ce lieu là quand se sorti après intimement se ruh pour sortir dans ce lieu là ban farishta je descends l'eau ban là après farishta pour dire comme ça et je dis pas peur pas un sagin tu peux quitter dunia tu peux quitter ton madame tes enfants ton l'argent ton du billet ton la case ton sagin comment un djimoun à un autre pays quand get enfants madame l'endroit quand sorti du monde depuis la Ricouan il était mon l'endroit peut quitter un djimoun il quitte ça quand il est assis l'avion il était Moristo airport quand il avion take off les sagins qui est mon pays peut quitter pareil comment un du monde quand il quitte dunia les sagins que mon doit peut quitter mon pays peut quitter mes enfants peut quitter mon maman peut quitter mon jibier l'argent tout ça peut quitter mais ban farishta dans ça les aller dire pareil sagin pas peur ban farishta dit pas peur pareil sagin et prend bonne nouvelle pour paradis Allahu Akbar prend bonne nouvelle pour paradis et autres fin être promis
Que Allah subhanahu wa ta'ala fait une promesse avec bon banda, avec musulman, avec mu'min, qui si tu passes la vie de dunya, d'après shariat, d'après sunnat, reste l'islam, l'iman, quand tu peux écouter dunya, quand tu peux aller dans barzak, Allah subhanahu wa ta'ala fait une promesse qui me donne 3 paradis. Subhanallah, farishta dit comme ça. Mais quand fini fait un intiqal, le musulman a une responsabilité, je besoin de lui faire ghusl. Ça ghusl qui ghusl, farze kifaya. Qui appelle farze kifaya. Mayyat so ghusl c'est farze kifaya. Farze kifaya qui était ça? Farze kifaya si ena jimun fini de lui ghusl, alors tout le monde so droit. Tout le monde so hak fini complète. Si personne pas donne li ghusl, tout le monde gagne guna. Personne pas donne li si ghusl. Ça c'est farz kifaya. Mais comment nous donne so ghusl so façon? Alors, il y a beaucoup de façons comme on explique difficile, du monde pas comprendre. Moi peux expliquer une normale façon. Très bien. Amen. Takhta, nous appelle qui Benoît. Hein? Comment on appelle ça? Takhta, un Benoît, comment dire? Un charpai, si pena, amené. Après, bizin guetté, bizin laos à Benoît là. Ça takhta là. Hein? Si y a un saleté, bizin nettoie. Après, Ali, agarbati ou bien l'oman. Il y a un mustahab façon qui 3 fois ou bien 7 fois faire le tout à Benoît là. Ça agarbati. Après mettre en bas ou bien côté ça takhta là. Amin mayyat. God mayyat le sa Benoît là. Comment on expliquer comment nous mettre un mayyat dans qabr qui sur la tête qui position hein? Vers les sites, hein? Sur les pieds, vers les noms. Hein? Et Figia, besoin mettre vers Qibla Sharif. Pareil comment mettre le Benoît, ça maillat là, abré, besoin tirer sur l'aise. Comment un भाई ने demandé कि combien du monde maximum, minimum, donne ghusl en maillat. On finit dire qu'il minimum 4 jimun. Un jimun c'est qui donne ghusl, un. Deuxième c'est qui donne les coups de main, 2. Troisième c'est qui amène de l'eau et donne de l'eau, 3. Et quatrième c'est qui ramasse tout ban saleté, prend un plastique après tout ban qui chose ramassé. 4e jimun. Minimum 4 jimun. Alors, besoin tirer sur linge. Si capable आसानी के साथ अगर चिया कर सकते हैं लेंस तो आसानी से साथ उतारें वरना उसको काट दें डिसरे कर दें couper कर दें उसको लेंस को mais malheureusement aujourd'hui les gens pensent comme ça que ça dit mon là ils mettent ça gilet là dans les intiqal on passe vie au PA aujourd'hui les gens zetli de saleté un joli gilet ou bien un joli linge madame mais dans sa gilet là dans sa poche là il y a une casse pas pire dans poche il y a une casse les ramasser les garder mais ça gilet là non Dahalia la kajimuni n'intégrale les médecins les zilés là les médecins linge là l'habillement là non pas servi bonne madame je dis comme ça pas toucher maillat papa mais si maillat les met un bisou un zanou les capables chia bisou chia après capable servi papa qui ça bracelet là avant l'itiena dans sa maillette là dans la main sa bisou là sa zanou là sa telle quelque chose là capable
उससे डर नहीं लगता है, लेकिन मैयत को छूने से डर लगता है। मैयत ने जो ज़िंदगी भर एक जानू पहना, बीजू पहना, ब्रेसलेट पहना, उसको इस्तेमाल करते हैं। बल्कि माले गैज़ माँ कभी कभी तो ऐसा होता है, इधर इंतकाल हुआ उधर लामुआ उए हो जाता है। बिल्फी चीफ़ी उए करके देख लेते हैं कितना बचा है, जिसके हाथ में जो आया गमा से कर लिया। बाद में फिर कहते क्या है आप गजिया कमसा मुनगेत मो बापा मो मामा akosa mon ramasa isoza mun fini expliquer ka anjimun fini intiqal kit kas bijou jibien lazan loto lakaz ça c'est virasat ça tout ban enfants ina haq Padia comme ça qui non, mon guette dernier coup, mon guette mon maman, mon papa, depuis 5 ans, 10 ans, mon guette mon papa, mon maman, mon donne autant facilité. Rosa, quand maman est intégrale, tout ban l'argent, gibier, ça pour moi, non. Dans la vie, un maman, papa, capable de n'importe qui chose, n'importe qui enfant. इन गौसों को पूरा लकाज दे दें, वो उनका हक है। मैं का फिनी इंतकाल किद्दा दुनिया लाजा बीजूर जिबिए सब चीज़ों पर फिर अब सब बच्चों का बराबर का हक है। कुमा शरीयत इंडिया की पॉल एग्ज़ाम एंजिमुन इन इंतकाल इन अकाद गासो दे चीफ़ी कलिनकित एन मिलियन रुपी Bizin pautas comme ça, qui de 200 roupies pour gosso, 500 000 roupies pour chifi. Un pas chifi, des pas gosso. Ça même, tout le monde qui chose bizin comme ça. Si un dimon prend 1 roupie ou bien 1 supplice, il peut donner réponse devant Allah subhanahu wa ta'ala zu qayamat. Bizin gete. Alors, je vais expliquer. Bizin, tu as son linge, après, couvert sur partie privée. Je te connais, partie privée, depuis l'ombre jusqu'à Zenou. Ensemble avec Zenou, bizin couvert. Entier, linge, en entier, après, couvert sur partie privée. La toile ou bien une serviette, une grande longue serviette, c'est उसको कुएं करें après साजिमुल्ला c'est qui les pour donner ghusl les bisins mettent un lego ou bien attache un la toile si y en a lego bisins mettez dans la main après faire ali bisins faire ali istinja ça veut dire bisins nettoyer son partie privée premier de l'eau à jaye, quand fini amène de l'eau, après checker de l'eau, qui fait? Si on a beaucoup chaud de l'eau, besoin mettre un frais de l'eau là-dedans. Un normal de l'eau, comment nous capables de baigner? Parfois, un dimon, beaucoup chaud de l'eau, mettre l'eau, l'écho, mayat, pas bon. Si un l'écho sur la main, on prend, après on quitte comme ça, comment nous gagnons un jimal de lier, pareil comment. Mais il y a un problème. Si dans la salle de bain, dans la salle de bain pour faire baigner, quand nous prenons de l'eau beaucoup chaude, après mettez-moi faire comme ça, même que mon léco finit brûler. Pareil comment. Quand nous mettons un chaud, de l'eau chaude, l'eau maillot sur l'éco, il y a un problème. On va bien checker. Après nettoyer sur partie privée, veut dire faire un stinja. La charia d'India, mais ça mayat là, il n'est pas capable de faire istinja, mais ça veut dire besoin nettoyer sa place là. Et na savon, besoin mettre savon, besoin nettoyer. Après, faire ali wazou. Mais dans pareil comme namaz sur wazou. Mais quand nous faisons wazou pour faire namaz, ou bien pour faire tout Coran Karim, ou bien pour faire tawaf, avant nous lave la main, faire couler, mettre de l'eau dans les nez. Mais quand on donne mayat sur ghusl,
faire, quand nous faisons les wazou, el mayat, pas faire comme ça. Direct, là où figia. Donc, tu connais dans wazou, il y a combien de farces? Combien de farces? 4 farces, subhanallah. 4 farces. Première farce qui est ça? Là où figia. Premier, là où figia. Après, deuxième, là où l'ami. Après, troisième, faire un masalo la tête. Après, quatrième, là où les pieds. Pareil comment. Mais, s'il y en a possible, bien nettoyer son néné avec un coton. Néné nettoyer. Mouiller ça coton là, après bien nettoyer à une coton. Ça c'est coton là, bien zette dans plastique, dans ça, ce qui ramasse saleté. Après deuxième coton prend, bien nettoyer deuxième côté néné. Mettez. Après troisième prend coton, bien nettoyer sur les dents. Pas mettre de l'eau en dents, pas mettre de l'eau. Qui fait ça? Parce que si nous mettons de l'eau dans la bouche ou bien dans le nez, il n'est pas capable de rentrer en dedans. Il reste comme ça même. Mais quand nous finissons de donner roussal, après donner kafan, après doucement, il peut sortir. Quand il peut sortir, ça de l'eau là, kafan pour une sale. Pas mettre de l'eau en dedans. Mouiller, coton, bien nettoyer un côté et deuxième côté, mettez. Après, prends un autre coton, vous nettoyez sur les dents, ça jette. Après, quatrième prend, nettoyez un côté sur les oreilles, jette. Après, cinquième prend, coton un ticket, mouillé, après nettoyez deuxième côté sur les oreilles. Capable de faire. Quand fini, faire oiseau. Oiseau comment faire? Sur figia, sur la main, faire un massage la tête, après, là où les pieds, après, prends de l'eau. Mais quand de l'eau prend, pas mettre comme ça, qui dans balti, mettre un boîte, non, un dimoun dans le lit, prend de l'eau, après, mettre dans sa boîte là, dans sa porte là. Ce qui servit ça dimoun là, c'est qu'il peut donner roussal. Quand fini faire un oiseau, après, un des gens prend sur l'écho et donne carotte, côté gauche. C'est-à-dire, en bas, c'est côté gauche, et ça, sa position, bien là, oui. Après, mettre de l'eau en bas, et l'eau sur les dos, sur la jambe, depuis la tête jusqu'à les pieds. Bien mettre de l'eau. Après, faire deuxième côté comme ça même. Côté droit en bas, côté gauche là-haut, donne un carotte, un deuxième donne coup de main, faire comme ça, après mettre de l'eau depuis la tête jusqu'à les pieds. Ça c'est un. Après, quand fini, mettre de l'eau comme ça, après mettre de l'eau depuis la tête, direct là-haut. Depuis la tête jusqu'à les pieds. Quand fini de faire comme ça, après un du monde, besoin d'un coup de main. Mayat là, besoin lever un chiquit. Besoin lever, après faire comme ça même, doucement, au deuxième ici. Quand fini, tu as une saleté, besoin nettoyer. Besoin nettoyer. Comment dire? Besoin d'un coup de main, un chiquet débouté. C'est assise un chiquet. Après, les dos et la tête, la main passe comme ça. Après, guetter si un chiquet saleté finit sortir, besoin nettoyer. Après, mettre bien. Une fois, l'eau entière, l'écho, mettre de l'eau, finit faire un roussal. Dans Roussal, comment on expliquait? Une fois, mettre de l'eau entière, l'écho, ça c'est qui ça? Farz. Ça c'est qui ça? Farz. Et 3 fois les sunnat. 3 fois mettre de l'eau entière, l'écho, ça c'est sunnat. Fini faire Roussal.
It is simple. Buku jimun pas kumsan, oh buku difícil kumanu don gusal. Bisa kone si en jimun so papa in intikal li mem bisa don gusal. Li mem bisa don gusal. En jimun so fea in intikal li mem li bisa don gusal. Ki fea pas ki li be sawab sase ka en jimun don mayat so gusal li gain buku sawab. Et quand un proche femme, la famille donne roussal, famille mayat là, il est bien content. Il est bien content. Et banulma ikram finjia un muttaqi parhezgar jimun li besoin donne roussal. Et Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fin donne nous conseil que quand un jimun donne roussal, un mayat, quand il get un défaut, mayat soit un défaut, pas besoin raconte dewa banjimun. Si li get un miracle kuma que se figia li vin nurani li kuma un sourire sajimun la un beau jimun comme ça même. Les besoin explique ça c'est façon là, ça c'est événement là, les besoin raconte dewa banjimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finit. À cause quand un jimun donne roussal Kuma bayi gora in demande कि पागेट सो पाची पीवे जिस उतना ही देखें जितने में कि काम हो सकता है लेखों को ज़्यादा उसके मत देखें पफवा एंजिमुन के लेखों में कोई देफो कोई प्रॉब्लम होती है आदमी नहीं जानता है लोग नहीं जानते लेकिन उस टाइम मैयत का बदन हुए होता है 3, 4, 5 जिमुन के सामने तो अगर कोई देफो देखें तो उसको लोगों के सामने बयान ना करें la famille अगर गुसल देती है तो इसमें मैयत की खुशी होती है और उसको ज़्यादा सवाब मिलता है और ये ज़्यादा बेहतर मसला है कि कभी भी फामी में इंतकाल हो ये ना इंतज़ार करें कि तिलजिमुन अलहसान से आएंगे तब गुसल देंगे हो सके तो खुद ही गुसल दें इसमें ज़्यादा मैयत को फ़ायदा होता है। उसके अलावा बहुत सारे मसले हैं मैयत के लिए कि जब भी गुसल के दरमियान गुसल दे रहे हैं पौधा गुसल बिज़े आलिम अगरबत्ती उबिए लोबान कि पफुआ देपी मैया सोले को सुची एन सालते सिंगें सालते कांजुन गेते सो सांची है तो आदमी का दिल वो हो जाएगा तो इसीलिए अगरबत्ती या लोहबान वहाँ पर जलाकर रखना चाहिए। मीशे का इंतकाल हुआ है तो मीशे ही गुसल उसको देंगे मादाम का इंतकाल हुआ है तो मादाम ही गुसल उसको देंगे। ची बाबा अगर छोटा बच्चा एंची बाबा एंची गासो लिन इंतकाल मादाम का पाउदुन गुसल पागई कुमा एंची चीफी लिन इंतकाल कपाउदुन एन मीशे कपाउदुन ली गुसल में ये बेहतर तरीका ये है कि मीशे को मीशे मादाम को मादाम गुसल दें। एन लुत मसला सी एन जिमुन सो मादाम इन इंतकाल अलो सो मीशे लिपा कपाउ दुन ली गुसल लिपा कपाउ टुसो लेको साउकेन लैंस कोबा नो कोबा सी एन मादाम इन इंतकाल अलो सो मीशे लिपा कपाउ दुन ली गुसल मीशे उसको गुसल नहीं दे सकते और न ही उसके लेकों को टुस कर सकते हैं बगैर किसी कपड़े के है ना कफन फिनी में ते आप गली कपाओ तुझे मैं बन लोगों के दरमियान में ये मशहूर है कि बुकु बन मादाम वी मादाम लीजिए कुमसानो एन मीशे लिपा कपाओ दोन कांधा एन मैयत सीसो मादाम इन इंतकाल लिपा कपाओ देसान दा कबर मादाम लोग के बीच में ये बात होती है कि मादाम का इंतकाल हो गया है तो मीशे टूसे नहीं कर सकते हैं जनाजे को कांधा नहीं दे सकते हैं मैयत को कब्र में नहीं उतार सकते नो ये सब जाहिलाना बातें हैं। लिकपाओ दुन कांधा लिकपाओ देसान दा कबर जिस गुसल नहीं दे सकते और बग़ैर किसी कपड़े के लातवाल के उसके लेकों को टूसे नहीं कर सकते यानी बग़ैर किसी चीज़ के हायल लेकों को
छू नहीं सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, उससे बचना है ये दो चीज़ों से। बाकी वो उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ सकते हैं, कंधा भी दे सकते हैं, कब्र में उस मैयत को उतार भी सकते हैं, दिशान भी कर सकते हैं, और बहुत सारे मसले हैं। इंशाअल्लाह लुत्फ़ से में ako mo po explique Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq que nous pouvons faire amal lo saban maslala. Une question? Une question? Après intégrale, que pas tous sur l'écho. Non, après intégrale tout de suite, ou bien un état après deux états. Sans aucun linge, बगैर किसी कपड़े, हाथ फिगिया लामे. Ako? Oui. Fini mettre dans kabar. Don fini mettre kafan dis. Pas mettre dans kabar. Ako? Ako? सर को उठाकर थोड़ा सा, क्योंकि अगर उठाएंगे नहीं तो नीचे पानी नहीं जाएगा. कोते गो द्वार जब आप करवट देंगे तो चला जाएगा पानी. कोते गोश जब आप इधर करवट देंगे तो हमें लातेत के लिए लातेत को थोड़ा सा उठाकर नीचे पानी डालना पड़ेगा. ओके.
हाँ हाँ, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। लाबाब अगर है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, लातेत में यूज़ कर सकते हैं, लेको में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन सावो जो उन्होंने पूछा है उसको मैं लुत्सेमेन स्प्लिके करेंगे कि किस कालिते का सावो होना चाहिए। अको वी अभी बता दें अब अको अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल-फ़ातिहा। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم.